You can share. I'm sharing what you people are seeing now. Excel. All right. So suppose I have a main program with 5 lines, and I have labeled those lines with M1, M2, M3, M4, M5, and first I have to tell you the exact execution sequence of the program. If I execute this program, which have only 5 lines, what will be the execution sequence? Can you tell? Okay, right. M1, then M2, Right. then M3, then M4, then M5. The program will run according to the number. So first line, second line, third line, fourth line, fifth line. Yes, and I have put it labeled only because I want you to tell me in future I have to ask some questions regarding some lines. Okay. Suppose, yes, Sorry for please. disturbing you, but where's the program? Function itself at the IDE where you put down the program to Sir, return, ये right? Does someone want to talk to me? Is Okay. Umar want to talk with you? He is asking where is the program. When you are assuming to say M1, M2, M3, the sequence of the program you are showing, he is asking where is the program, where is the console. All right. So um, just assume there are 5 lines written in a Python program. And to refer those lines, I have put these labels to refer to these lines. This is the first line, which label of this line I put to refer this line. If I'll ask you when I will ask about the reference of a line, you should tell me the label of that line. Is it Omar? Is it is it clear now? Yeah, now it's clear. Yeah. Thank you. अदनान, ये आवाज इनकी साफ नहीं आ रही है. आप जो बात समझे मुझे बता दीजिएगा. पहली वाली बात भी मेरी नहीं समझ में आई जी थी. उमर, मैंने आपको पहले ही कहा था माइक थोड़ा सा अपना आप सही कर लें. यस्टरडे यू हैव द सेम प्रॉब्लम, तो काइंडली यू जस्ट कम क्लोज टू द माइक. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सर. ओके, करते जाइएगा. अच्छा, if I have a program, if I have a function named, for example, ABC, suppose it consists of 3 lines, and the label for these lines is F1, F2, and F3. If I run this program and do not call this function ABC from the main program, then what will be the execution sequence? First,
M1 will be executed next. What will be the next line? Or F1 will be executed first? What do you people think? Hassan, Fadil, Please ask again. Uh, suppose there is a program there is a function ABC with three right. lines in it, Say but I have not called it from the main program. it will not be run. Okay, can we say the execution sequence of this program will be M1, M2, M3, M4, and M5? Is it Yes. okay? But if I call it from, say, for example, here, ABC. Now, So what will then be it will run M1. then? Then when it runs M2 with the function of ABC, it will start with F1, F2, F3. Then it will go to M3, M4, M5. M5. What other people think about it? जी सर अब सही F1 आएगा, F2 आएगा, फिर F3 आएगा, तो फिर ही नेक्स्ट वाले आएंगे. हाँ, जब इसकी क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, मैंने इसको रिकॉर्ड लगाया हुआ है या नहीं? नहीं सर नहीं रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है. अच्छा, you said M1 will be executed, then M2 will be executed, M2 will be executed, and then F1 will start. then Since you ABC have function called will, ABC in the M2. So yes. then F1, F2, F3. So execution of main program will be stopped or paused. It will be paused, and then it will continue after the execution of function ABC. F1, F2, F3. Then next line. Then M3, M4, M5. M4 M5 No, 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 no. This is the main. Uh, this is the main mistake. It will return to the same line. It always returns to the same line. When a function is called from from whichever line, it comes to the same line. Okay. So it comes back to the line M2, then M3, then M4. All right. If I have another program, for example, another function, ABC, named it XYZ. Suppose it has two lines, X1 and X2. right What about the execution sequence now? Same or different? Now it will be the same execution sequence since a function XYZ has not been called. All right. But if I call it from here, XYZ, then? If you call it over there, then the new sequence will be M1, M2, then F1, F2, F3, then M2 again, then M3, M4, then X1, X2, then M4 again, and then M5. Right. This is the execution That's sequence. very good. Other people are understanding this. They are two different functions they are calling, and they are just clearing the concept of how a function can work when we call function on the main program. This concept Right. clearing has been doing here. So now, what will be the execution sequence? Now, sir, अगर आप थोड़ा to the left जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट पर ही है. चलिए मैं इसमें एक लाइन इंसर्ट कर देता हूँ. आपने शायद क्या अच्छा आपने उसको डिलीट कर दिया था. ओके ओके. तो अब आपने जब एक्सिक्यूशन शुरू करिए तो आपका M1 शुरू होगा, देन M2 शुरू होगा, फिर आपका फंक्शन कॉल होगा F1, F2, फिर F2 के राइट साइड पे X1, X2, फिर F2 अगेन ऑन द लेफ्ट साइड, फिर F3 आएगा, फिर
M2 दोबारा रिपीट होगा इधर और फिर M then M3 M3, M3 आपने लिख दिया है? then जी फिर M4 रन होगा फिर X1 X2 अगेन फिर M4 अगेन X2 फिर M4 again and then M5 at the end. all right. So does anyone has any confusion in it? I hope Sir, not. specifically me, can you hear me now? Yes. Okay, so sir, my main question is in line line 14. There's main over there. This Is that one. a subroutine? Yeah, subroutine, This is or is an that Excel also file, so it is not code. so it's not code? No, it's not code right now. It's just the theory behind the code. So this is a demonstration of how recursion basically works. No. Is that I've not told you about recursion yet. I'm so? usually students have difficulty in knowing exactly what happens behind the code. So I'm trying to clear it first. Then I will start telling about recursion. So, but M1 and M2 are M1 and M2 are of another procedure, and then F1, F2 are of another subroutine, and then X1 and X2 are of another subroutine. Yes. M1, M2, M3, and M4 are all lines of code, single lines of Yeah. code. And then ABC is a function, XYZ is a function, and those are being called in the lines. Okay. So, okay. I'm still confused, like how you're supposed to carry it out. Like, how do you solve the question necessarily? Because I'm still stuck on why did you choose M1 and M2 and not F1 and F2 as the first two lines of code? So Like, whenever a Python program is executed, only the main function main lines are executed. Functions are not executed unless they are called from the main program. Right? So if there is yes. no function calling from the main program, even despite the fact that A, B, C, and X, Y, Z are there written here, but since these are not called from the main program, these will not be executed, and only M1 first line execution first line that will be executed is M1, then M2, then M3, then M4, then M5, and no ABC will not be called, XYZ will not be called. But if M4 line has XY if at line M4 if I call XYZ function, then execution sequence will be M1, then M2, then M3, then M4. When it executes the line M4, then it calls the function XYZ. Then it'll be And X1, XY, X2. yes, then X1, X2, But M1, then, but M2, M3, M4, then X1, X2, but then M5, right? Or it E- goes to X1, straight to X2, M5. then M4, then M5. Why M4? We have already executed M4, but then we're going straight to M5, and M4 contains the XYZ, so we should be at M5, right? So this is the rule. This is the rule that this is the usually students have this confusion, which I am trying to clear, that whenever a function is called, the function returns on the same line. Why? Okay. If there is can I write y is equals to xyz multiplied by 10? Is it okay? जी How so this line will basically be? आपने पहले कॉल करा फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया at the end. तो अगर वो यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? सही. इसलिए सेम लाइन पे रिटर्न होना जरूरी है. A function always return a value. On the calculator, you have x square and x cube. So if you press 5 and press x square, it will give you 25. So always function has to return on the value on the same line. This is the rule.
Okay, now I get it. But thank you. Welcome. So now the question is, I can call a function from the main program, and it could be ABC as well. I can call a function from the main program, and that function may call another function, like ABC is calling the XYZ. So if a main program can call a function, and a function can also call a function, then can a function call itself as well or not? Yes. Yes, A it function can call if itself. a function may call itself, just like it may call another function. So when it calls itself, does that mean when a function calls, let's say, ABC inside of ABC again? Yes, yes. Yes. Okay. Now So that would be now like infinite, right? Like yes, infinite. maybe infinite. Just see whatever it is written, how will it be executed? M1, then M2, then M3, then M4, then F1. Execution of main will be pending, and F1 is ABC function starts executing. So this is F1, F2. When it starts executing function at F2, then another copy of this function is put into the memory logically, and it is that copy starts executing. So F1 and 2. F1 then F2. So now there are two copies of function ABC. One is this one, and second one is this one. But from at line F2, it is calling ABC again. So F1, F2. pending execution of first copy is pending. Execution of second copy is also pending, but a third copy is made and it starts executing. So it will be executed on and on and on, Oh, so this infinite is how times. recursion works. Oh, okay. Yes. Makes Yes. sense. But Can you then repeat how this does the point again? conditions Sorry. sorry Can you- about that. You people understand about. Can you repeat this condition? You're saying that on F2, the ABC is again executing F1 and F2, and the third time the function is calling itself. You saying this, sir? Third time नहीं आएगा, वो second time आएगा. So ABC will run ABC again, and then there will not be a third time. Yes, yes. सर अदनान, आपने आपने क्या कहा? सर बदर समी आपने एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ वो लिख दिए एक्सेल शीट में, जो आपने फिर कॉल नहीं करी. किस लाइन की बात कर रहे हैं आप? M4? देखें, अभी आपने जो कॉल करा है वो M1 M2 M3 M4 पे जब शुरू होता है, M4 पे आपने ABC कॉल करा है, जिसपे F1 F2 शुरू हुआ, फिर दोबारा F1 F2 F3 शुरू होगा, फिर वापस जाएगा F3 F2 नहीं पे होगा. और फिर F3 नहीं होगा. F3 नहीं होगा execute. सही. ओके, राइट राइट राइट. ये चीज ये पूछा जा एक रहा है. मिनट That बन was my गया. point. जी. Because it's still pending. Like it's still pending to be finished. Then it'll probably Yes. do it. Yes. So infinite copies will be in memory if it is written like this. So this is the reason that almost all recursive functions. Now, what's the definition of a recursive function? A function that calls itself is called recursive function. So in every recursive function, recursive call is usually with an if statement, so that it is to prevent it from executing infinite times. Okay, now this is the execution mechanism behind the functions. Now, what about
now I will try to explain. Now I will show you a code of a recursive function and ask what will it do. So let me find some appropriate. Do you go for the factorial example or any other example? Factorial example. Okay. This is the main program, and this is a function for calculating factorial. Is it a recursive function? No, Why not? because it's not calling. Oh, it is calling fn again. Okay. It will be a recursion at the return value. Yes. If a function call itself inside the function, that is called recursion. आपने fn लिखा हुआ है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए Okay. डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ी. Okay. अच्छा, हम एक मिनट जरा समझ को क्लियर कर लो ताकि एक्सप्लेन सही हो सके. अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी, सपोज पहली लाइन पे जब पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो ये पूछेगा एक नंबर, और सपोज मैंने नंबर एंटर किया 4, तो ये 4 कहाँ स्टोर होगा? एक्स में. x is equal to 4. सेकेंड लाइन पे क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा. जब फंक्शन कॉल होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लॉजिकली इसकी एक कॉपी बन जाती है. तो लॉजिकली इसकी एक कॉपी Right. बन गई, और जब भी कॉपी बनती है तो इसके अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए जगह इसी कॉपी के अंदर एलोकेट होती है. इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक, n. सो n के लिए Right. जगह एलोकेट हो गई, और इसके अंदर वैल्यू अभी कोई नहीं है. अब जब ये कॉल हुआ तो इसकी एक कॉपी बनी और n के लिए जगह रिजर्व हो गई. अच्छा, क्योंकि इसको कॉल किया गया है y इक्वल्स टू fn x और x की वैल्यू 4 है, तो ये x जो है वो आर्ग्यूमेंट है. ये कहाँ जाएगा? इस पैरामीटर में जाएगा, n में. तो इस कॉपी में n की वैल्यू हो जाएगी 4. 4. अब ये कॉपी एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन कॉल किया जाता है सबसे पहला काम क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज पैरामीटर्स में ट्रांसफर होती है. ठीक है. अब जब ये एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी तो पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? फैन इक्वल टू 0. क्या कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? जी. नहीं समझा क्या It कहा? is false. यस, दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. दोबारा रिपीट करेगा ये क्वेश्चन आपने जो करा है? मैंने ये किया है, मैंने कहा है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले लाइन पे तो ये इनपुट लेगा. सपोज मैंने वैल्यू दी 4. इनपुट लेगा, फाइन, सही है. तो आपने इनपुट लिया है 4. तो अब n मैंने को 0 के बराबर सेट करा ना. सेकंड लाइन पे ओके, सो ओके, तो फिर आपने इफ स्टेटमेंट. नहीं, अभी इफ पे नहीं गए ना. अभी तो मेन देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, सेकंड लाइन ऑफ सही, मेन प्रोग्राम. ओके. अब सेकंड लाइन ऑफ मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगी ना. ओके. सेकंड लाइन पे लिखा हुआ इज इक्वल टू एफ एन एक्स. इसका मतलब है कि फंक्शन की एक कॉपी बनेगी, लॉजिकली उसकी एक कॉपी बनती है. तो ये जो मैं राइट, हाईलाइट कर रहा हूँ ये इसकी कॉपी हो गई. कॉपी का मतलब क्या है? सही, पूरा कोड लिखा हुआ है और जो वेरिएबल इसमें है उसके लिए स्पेस भी उसी कॉपी के अंदर एलोकेटेड है. राइट. सब जब ये कॉपी तो बन गई, लेकिन इसमें जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कॉपी बनेगी, और दूसरा काम क्या होगा? आपने जो n की वैल्यू ली है, जो x इज इक्वल टू 4, वो फिर इनपुट होके फंक्शन रन होगा. हाँ, ये x की वैल्यू 4 जो है 4 के साथ ये फंक्शन कॉल होगा, यानी x की वैल्यू 4 सही है है, तो तो कॉल होगा fn4. तो fn4, फाइन. 4 इस फंक्शन में किस वेरिएबल में असाइन होगा? n के जगह n. पे वो 4 असाइन हो जाएगा, बिल्कुल सही है. इसलिए अब जब हमारा ये ये लाइन एग्जीक्यूट पैरामीटर होनी था. शुरू होगी, बिल्कुल सही है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो n की वैल्यू तो 4 है. सही, तो इज 4 तो इक्वल ये टू 0, फॉल्स ये रिटर्न फॉल्स करना हो गई. चाहिए. फॉल्स हो गई नहीं, रिटर्न नहीं करेगा. कंडीशन फॉल्स हो गई. कंडीशन सही, फॉल्स हो गई तो इसका मतलब रिटर्न 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा. else पे एल्स जाएगा. के एल्स ऊपर पे आ जाएगा. जाएगा.
एस पे लिखा हुआ रिटर्न एन इंटू एफ एन एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू क्या है, रिटर्न क्या चीज होगी, रिटर्न होगी 4 Return मल्टीप्लाइड is बाई 4 एफ एन times fn 3. 4 माइनस वन। So 4 minus 3. 4 minus 1 is equal to 3, 3 right? हो जाएगा। अब इस रिटर्न होने के लिए इसको ये फंक्शन एक दफा और कॉल करना है, क्योंकि उसको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। जब फंक्शन एक दफा और कॉल होगा तो इस पूरी चीज की कॉपी यहाँ दोबारा बन जाएगी, लेकिन इस कॉपी में एन की एक और एन के लिए, इस कॉपी में भी एन के लिए एक जगह अवेलेबल होगी। n की अब न्यू वैल्यू 3 हो गई इस वाले न्यू फंक्शन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन कॉल हो रहा है विद 4 माइनस वन, एन की सही। वैल्यू, इस कॉपी में एन की वैल्यू 3 है। याद रहे कि ये वाले जो कॉपी है, फर्स्ट कॉपी जो है, इट इज पेंडिंग, It is still इसकी pending, right? स्टिल पेंडिंग। इसकी सेकंड कॉपी बन गई और सेकंड कॉपी एग्जीक्यूट Sir, होनी शुरू हो गई। जी like when you're जी। multiplying by something, it has to be like stored in a previous value. But where is this being stored in? You know, like 5 times, for example, if you want to find the factorial of 3, right? You multiply 3 times 2 and then 6. But where's 6 being stored so that it can be multiplied by 1? So that's mainly my confusion in recursion. When it's making copies of itself and when the when the I'm trying to remove that confusion. Keep on following, and let me finish this example. And after that, if you cannot get the reason, if you, अच्छा अभी तो टाइम है, if you cannot get clear Understand. understanding, then tell me again. I will try to explain some okay, in thank some you, other way. thank you. Welcome. अच्छा, मैंने कहा कि इसकी कॉपी बन गई, इस कॉपी में एन की वैल्यू 3 है, अब ये स्टार्ट हो गई एग्जीक्यूट होनी। तो फर्स्ट लाइन की पे क्या है, एन की वैल्यू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो इसका मतलब रिटर्न 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पे आएगा। एल्स पे आएगा तो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा। अब जब रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा तो जब तक इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो जाती उस वक्त यहाँ से रिटर्न हो नहीं सकता। अब इसको इस इसको इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू इस कॉपी में 3 है, लिहाजा ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय एफ एन ऑफ 3 माइनस 1। It become 2। अब इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक दफा फंक्शन को और कॉल करना है, लिहाजा मेमोरी में इस फंक्शन की तीसरी कॉपी बन जाएगी। पहली दो पेंडिंग है, लेकिन इसकी और इसमें भी एन के लिए जगह मौजूद होगी। तीसरी कॉपी में एन की क्या वैल्यू होगी? 2। यस, तो इसका मतलब ये फिर एल्स पे आएगा। अब इस कॉपी में क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, लिहाजा ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ एन ऑफ 2 माइनस 1। ये 0 2 minus टाइम 1। जाने के बाद सही होगी। अब जब ये क्योंकि इसको इस फंक्शन को इसको कैलकुलेट करने के फंक्शन को एक दफा और कॉल होना है, लिहाजा इसकी मेमोरी में एक और कॉपी बन जाएगी। तो ये आइटरेटिव हो गया ना, बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटिंग अगेन एंड आइट्रेशन अगेन। नहीं है, नहीं आइट्रेशन नहीं है, रिकर्जन है। आइट्रेशन रिकर्जन में फर्क नहीं होता वो है। आई नो अबाउट दैट, आइटरेशन भी इसमें आता है, उसी तरह का होता है, आई नो। ओके, अच्छा, अब इसमें इस कॉपी में एन की वैल्यू क्या होगी? 1। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ से कॉल हुआ है और 2 माइनस 1 1 होता है, लिहाजा इस कॉपी में एन की वैल्यू 1 होगी। अब ये पहली कंडीशन तो फिर फॉल्स है, लिहाजा रिटर्न पे आएगा। अब यहाँ रिटर्न में रिटर्न को की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए एन की वैल्यू इस्तेमाल करें, विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ एन ऑफ 1 माइनस 1। तो अब इसको कैलकुलेट होने के लिए इस फंक्शन को एक दफा और कॉल होना है। अब इसकी मेमोरी में एक और कॉपी बन गई, सारी सबकी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, किसी की भी कंप्लीट, कोई भी रिटर्न नहीं हुआ यहाँ से। हर एक रिटर्न वाली स्टेटमेंट पर है, लेकिन रिटर्न होने के लिए उसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसने फंक्शन को एक दफा और कॉल किया हुआ है। अच्छा, अब इस वाली कॉपी में एन की क्या वैल्यू होगी? इसमें एन की वैल्यू होगी 0, क्योंकि 1 माइनस 0। 0। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पहली जो कंडीशन है फैन इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगी।
ये ट्रू होगी तो रिटर्न वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, एल्स वाला तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इस कॉपी से वैल्यू वन रिटर्न होगी, और वन रिटर्न होगी कहाँ जाएगी, कौन सी कॉपी में जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, किस में? देखें, ये पहली कॉपी थी, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 3, ये दूसरी कॉपी, ये तीसरी कॉपी, ये फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ कॉपी। तो So फिफ्थ it'll go कॉपी to से ही fourth, कहाँ right? जाएगा? फोर्थ में जाएगा, Fourth? यस। यस, फोर्थ में जाएगा। सो फोर्थ पे ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, और एफ एन 1 - 1 से वैल्यू आई है 1, तो एक्सप्रेशन क्या बन गई? 1 × 1। तो 1 × 1 क्या होता है? 1। तो ये 1 रिटर्न होगा यहाँ से, और कहाँ जाएगा? जहाँ से ये फोर्थ कॉपी कॉल हुई, फोर्थ कॉपी कॉल हुई थी थर्ड से, और थर्ड में ये एक्सप्रेशन हो रही थी 2 × एफ एन ऑफ 2 - 1। अब एफ एन ऑफ 2 - 1 क्या आया? 1, पिछली कॉपी से। तो ये वैल्यू, तो ये क्या हो गई? 2 × 1 = 2। तो इस वाली कॉपी से क्या रिटर्न हो रहा है? 2। तो ये 2 होके कहाँ, 2 रिटर्न होके कहाँ जाएगा? जहाँ से ये कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था इस जगह से, तो ये इसी जगह वापस आएगा। अब यहाँ होगा क्या? 3 × एफ एन ऑफ 3 - 1 क्या आया? 2। सो 3 × 2 = 6। तो इस वाली कॉपी से 6 रिटर्न होगा। 6 रिटर्न कहाँ जाएगा? जहाँ से ये कॉल हुआ था, और ये कॉल हुआ था इस वाली कॉपी से। तो अब यहाँ क्या बन रहा है? एफ मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से F4 - 1 से क्या वैल्यू आई? 6। अब 4 × 6 क्या हुआ? 24। ये 24 यहाँ से रिटर्न होगा। ये रिटर्न होगी कहाँ जाएगा? ये तो पहली कॉपी है ना, तो पहली कॉपी रिटर्न होगी तो कहाँ जाएगी? In Y. So Y would be यस, equal to 24. यस, यस, Okay. Now it makes sense. So we're using the advantages of the subroutine function, which returns the value of itself to the previous again, and it gets used like a factorial. Okay. Makes एग्जैक्टली, sense. एग्जैक्टली। So on the Now, next because line, we'll print the value of, like in recursion, the main question mainly lies in where is this variable being stored. But because we're using the subroutine function where it just returns itself and it being multiplied by itself again and again, makes sense. Yeah. Thank you. welcome. So up till now, हसन we have हसन just, फाजिल समझ में आया? जी प्लीज क्या कह रहे हैं? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हसन और फाजिल से। जी सर। यस अंडरस्टूड। ओके। सर ये वाली मीटिंग एंड हो रही है, तो आप अगर न्यू लिंक अभी उसे भेज दें तो हम फास्ट ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये हो गया फैक्टोरियल। अब मैं एक और फंक्शन, अब मैं एक, आप अपने पास एक्सेल शीट खोल लीजिए, और इसी तरह से मैं इसका कोड दूंगा, उस कोड को आपने बस कॉपी पेस्ट किया, और इसी तरह से उसका ट्रेस बना के बताइए, जैसे मैं यहाँ पे बनाया, कॉपी बनाए, उसका एग्जीक्यूशन दिखाएं। ठीक है? तो मैं ये है, ये है वो, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, आपकी चैट में।